Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and enjoying your days. Today we will start third chapter, which is energy resources. In this chapter we gonna learn energy resources, its types, how energy resources produce energy, and one specific type of energy resource which is a fossil fuel. We will learn in detail about fossil fuels and its harmful effects on environment. This diagram is of fuel. Oh yes, yes it is. क्यों है ये fuel? Because all of these things we eat and we get energy from all of these things. ऐसा ही है, हम इन सब चीज़ों को खाते हैं अपनी डेली लाइफ में और इनसे एनर्जी हासिल करते हैं. बिकॉज एज फार एज ह्यूमन बॉडी इज़ कंसर्न, इट इज़ ऑल्सो अ सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो अ मशीन, अ कॉम्प्लिकेटेड वन, राइट. सो इट मीन्स कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स भी चाहिए. वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल द अदर स्टफ फॉर आर प्रॉपर ग्रोथ. सो उन सब चीज़ों के लिए हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, हम ग्रेन्स भी यूज़ करते हैं, फ्रूट यूज़ करते हैं, कैल्शियम रिच फूड यूज़ करते हैं, लेग्यूम्स यूज़ करते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स एक्ट एज अ फ्यूल फॉर ह्यूमन बॉडी. Same is the case with physical systems. For example, our car, bike, vehicles, our industry. इन सब चीज़ों को भी किसी न किसी एनर्जी रिसोर्स की ज़रूरत है. So simply we can say that energy resource are those sources which produce energy to any system, right? Energy resources basically categorized in two different classes: non-renewable energy resources and renewable energy resources. It depends upon its supply. Non-renewable energy resources has limited supply. ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल कोल आज से लाखों साल पहले बन चुका है और वी आर यूटिलाइजिंग दैट कोल नाउ डेज़, और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है. इसके जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं. सेम इज़ द केस विद नेचुरल गैस, सेम इज़ द केस विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट. But on the other hand, if you consider non-renewable energy resources जो हैं they are not limited in supply. They are producing again and again every day. For example, solar energy, for example wind, for example tidal energy. सूरज रोज़ निकलता है, we can get energy from the sun. रोज़ हवाएं चलती हैं, we can get wind energy from that waves, from the waves of the air. So these are renewable energy resources. एनर्जी रिसोर्सेज को हम या जो फ्यूल हैं उनको हम फेस, जो फिज़िकल फेस है उसकी बेस के ऊपर भी कैटेगराइज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देयर आर फ्यू एग्जांपल ऑफ लिक्विड फ्यूल्स: केरोसिन, हाइड्रोजन, डीजल, एथेनॉल एंड पेट्रोल. Solid fuels are wood. We commonly use wood for burning. Coal, as we all use coal for barbecue, right? And CNG, compressed natural gas, we all use these resources for our physical systems. Now the question arises, how the energy resources produce energy. किस process के through से energy जो है वो produce होती है. So there are different processes which is ignition and combustion. But on the other hand, these are two different terms. Ignition की term use होती है when you start burning, when you start the process of burning, just initiating the process of combustion. For example, जैसे आप घर में चूल्हे में आग जलाते हैं, you always used to burn the sui gas with match stick, right? सबसे पहला match stick जो है वो flame उस पर हासिल करते हैं and then you burn the sui gas. So that starting process, initiating the process is called ignition. So it is not any term which contains so many things. Then there is a combustion. Combustion is a whole process of burning. जलने के अमल को combustion कहते हैं. Either you are cooking food on stove or you are burning something outside your house. So that process is called combustion. जहाँ भी कोई चीज़ जल रही है, that process is called combustion. और combustion के process में क्या होता है, कोई भी fuel in the presence of oxygen burn करता है and convert it into its products. So the chemical equation here is sui gas is the chemical equation of sui gas is methane. So methane burns in the presence of oxygen and converted into carbon dioxide and water. Now you can see that methane, the formula of methane is CH4. It's a sui gas. So carbon is in red color and 4 hydrogens are connected with this atom, and oxygen is O2. 2 oxygen atoms are connected. When you provide flame to sui gas, इसके bond जो है वो break होते हैं ऑक्सीजन के और मीथेन के, and it separates, right?
सेपरेट होने के बाद नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एंड वाटर फॉर्म हो रहे हैं, राइट. सो दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स. वाई आई एम सेइंग द टर्म बाय प्रोडक्ट, क्योंकि बाय प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो हमें एक्चुअली चाहिए नहीं है बट इट इज़ फॉर्मिंग इन द रिएक्शन, राइट. एंड द अदर थिंग विच इज़ प्रोड्यूसिंग हेयर इज़ एनर्जी, जो कि हम यूज़ करते हैं. सर्दियों में हम आग जलाते हैं ख़ुद को गर्म रखने के लिए, हम चूल्हे के अंदर आग यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, राइट. एंड सेम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम जो है वो अपने सिस्टम्स को रन करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं. सो ऑल ओवर एरियाज़, ऑल ओवर द एरियाज़ जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज कंबस्टन एंड इग्निशन मीन्स जस्ट टू स्टार्ट दैट प्रोसेस, right. Now we studied about how fuel produce energy. Fossil fuel is a one specific type of energy, and that the fossil term stands for dead remains of living things. So fossil fuels are those fuels which are formed from living organisms, dead living organisms. For example, coal is a fossil fuel. Petrol is a fossil fuel. और सुई गैस is a fossil fuel. और you can say कि वो सारे fuels जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, all those are fossil fuels, बिकॉज वो उन चीज़ों से बनी है जो आज से लाखों साल पहले मर गई, ज़मीन में दफन हुई, एंड देन दे कन्वर्टेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनटू फ्यूल्स. सो दोज आर कॉल्ड एज fossil fuels. Now we will discuss in detail how coal was formed in earth. Coal, about 300 million years ago there were rich forests on the earth. और वो जो rich forest थे, after flooding and when they fell down on earth, bacterial action started in those forests और वो कन्वर्ट हो गए पीट के अंदर आफ्टर बैक्टीरियल एक्शन, आफ्टर डीकम्पोजिशन. जैसे हम देखते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज़ आप ज़मीन में गिराते हैं, इवन कचरा आप ज़मीन में गिराते हैं, ठीक है, द बाय प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय योर फूड स्टफ़, केले के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, ये सारी चीज़ें भी जब आप ज़मीन में गिराते हैं, यू नोटिस कि उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है. बिकॉज बैक्टीरियल एक्शन स्टार्ट होता है, वो चीज़ें डीकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं. एंड सेम इज़ द केस विद द फॉरेस्ट. जब ये डीकम्पोज हुए, इट कन्वर्टेड इनटू पीट. पीट इज़ एन इनिशियल फॉर्म ऑफ कोल. और पीट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर यूज़ भी किया जाता है एज अ फ्यूल. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ें ज़मीन के अंदर जो है वो दबती की, एंड आफ्टर व्हेन दे बरीड अंडर अर्थ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे कन्वर्टेड इनटू फाइनल फॉर्म ऑफ कोल. अब चूँकि हाई टेम्परेचर प्रेशर कैसे अंदर जनरेट होता है, बिकॉज आपकी जो कोल जो पीट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर्स फॉर्म होती रहीं of mud, gravel, stones, and ultimately they covered with sea. So at high temperature and pressure, the dead plants converted into coal. So now we use coal after mining, after extracting from earth. So this is how coal was formed. Now प्रॉब्लम क्या है फॉसिल फ्यूल्स का? फॉसिल फ्यूल्स एक तो ये कि हमें बहुत लिमिटेड सप्लाई है. आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स ये सप्लाई हमारे पास ख़त्म हो जाएगी. सो ये एनर्जी रिसोर्स हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते इस एनर्जी रिसोर्स पर. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर सम इफेक्ट्स, सम वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. So when we burn carbon and hydrogen, as we see in the equation, that carbon dioxide and water is produced. Carbon dioxide is a greenhouse gas. Greenhouse gas are those gases which trap the energy from the sun, and all of the energy which came to earth couldn't get back to the system, to the space. So what ultimately it affects, it affects generate the global warming, right. अब देख रहे हैं the temperature of the earth is rising, right, and due to that rising temperature हमारे पास glaciers melt कर रहे हैं because of the high concentration of carbon dioxide. acidic rain produce हो रही है, and due to producing acidic rain आपके पास forests जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, जो aquatic life है उसे बहुत ज़्यादा threat है, and आपके पास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है ओवरऑल ऑन द यू कैन से हेल्थ ऑफ अर्थ. So these are the negative effects of burning fossil fuels. So what we need to do, we need to generate some eco-friendly fuels which we use in future. So we studied in this chapter about energy resources, its types, how we studied about the process that how energy resources produce energy, and then we studied about fossil fuels, one specific type of energy resource, and its harmful effects on burning. Now what we need to do, you all form a 3D methane model. You just need 5 different balls and connect those balls with one another and form a 3D model of methane. And you also draw a diagram of methane.
as well, and write a paragraph on effect of fossil fuel burning, and the main point is you need to suggest to control the negative effects. 3 suggestions you must give in the paragraph. Make a list of frequently used fuels. For example, we use methane, we use wood, we use petrol, we use liquid petroleum gas, we use compressed natural gas whenever we go to a petrol pump. And you also need to solve the assignment which was uploaded here along this lecture. Hope everything is clear to you. Thank you.